Namaste, I am Advocate Akshay Bade and welcome to this channel of Into Law जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू MS Law CET 2024 and this is because the forms are being released. Forms आ चुके हैं for the 3 years LLB course and 5 years LLB course at the end of this week आ जाएंगे. So the 3 years LLB CET जो अभी scheduled है on the 12th and 13th of March tentatively. और जो 5 years CET है that is been scheduled on 5th of May. This is a 5th of May. So this is a golden opportunity for them. उन बच्चों के लिए जिनका क्लैट या किसी और एग्जाम में नहीं हो रहा है. सो मे बी दिस वुड बी द लास्ट एग्जाम राउंड ऑफ दी. तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, लाइक फ्रॉम स्क्रैच से अगर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो हाँ, एंड कंसिडरिंग कि वो काम भी कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फाइल वर्किंग ऑल्सो, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बन रहा है ज़्यादा कि लाइक हाउ टू मैनेज द टाइम एंड द वर्क लाइफ बैलेंस. और suppose they are working and only they are not able to give a dedicated hours of study daily, तो उनके लिए कैसे they should prepare so that they would be able to crack this exam and with good marks. So is 2-3 months enough preparation? I'm talking about this one 3 years LLB. 5 years LLB, they have a good amount of time. So yeah, it is pretty much doable for them to crack, considering they might be giving their boards now. So the 2-3 months period that is been over, that is remaining for the 3 years LLB. तो उनके लिए कैसे, मतलब if they are working also, तो how the time management should be. And now अगर time frame अब जब टाइम रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो सिलेबस एंड विच सेक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली. तो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा उन चीज़ों को जो मुझे हेल्प करती आई है एंड दैट हैड हेल्प मी इन 2018 टू क्रैक इट विद अ गुड परसेंटाइल. सो द सिलेबस फॉर द 3 years LLB, if you go through it, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज. सो जो इस एग्ज़ाम में तो अराउंड 150 क्वेश्चंस आएंगे और 1 mark each. The question would be for 1 mark each and there would be no negative marking. So no negative marking would be there, and total marks would also 1 mark each, means total mark is also 150. So the total marks are also 150. The time allotted will be 2 hours. So you have to complete 150 questions in 2 hours. It means 120 minutes. So hardly less than a minute you will be getting for each question. So considering this amount of time crunch you will be getting, तो इतना टाइम क्रंच है इस एग्ज़ाम में, तो महाराष्ट्र CET जो है, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम. सो क्वेश्चंस आर not on that difficult, इतने difficult नहीं होते compared to CLAT, but the amount of time you will be getting for those is very less. So इसके वजह से ये इस एग्ज़ाम को और डिफ़िकल्ट बनाता है कि टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा होता है एंड यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू, एट टाइम्स यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑल्सो. सो जब व्हेन वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल द सेक्शंस ऑल्सो, तो हियर कम्स द प्रॉपर स्ट्रैटेजाइजिंग. मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजी आती है कि लाइक विच सेक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज, कौन से सेक्शंस प्रायोरिटाइज करने चाहिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन मैनी क्वेश्चंस. और जब कट ऑफ इतने हाई होते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो यू शुड एटलीस्ट लीव अ क्वेश्चन ऑल्सो. फिर चाहे एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, इफ नॉट यू शुड नॉट लीव एटलीस्ट. तो जो भी हो कुछ एटलीस्ट मार्क करके आना चाहिए. एंड दिस इज द सिलेबस एंड मार्किंग आई एम साइमल्टेनियसली डिस्कसिंग विद यू इज अबाउट द 5 years CET. तो ये जो 5 years CET के लिए है, तो यहाँ पे एक पोर्शन जो ज़्यादा इंक्लूड होता है, दिस इज़ ऑफ बेसिक मैथ्स. तो इंग्लिश इज़ ऑफ यहाँ पे चेंज होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग. तो यहाँ पे लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं
जनरल नॉलेज के 30 आते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 40 आते हैं, इंग्लिश के 30 बन जाते हैं, एंड बेसिक मैथमेटिक्स इट्स ऑफ 10। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स इज़ नॉट देयर फॉर 3 years LLB CET, बट जो यहाँ आकर इंक्लूड हुआ है, सो द बेसिक मैथ्स इज बीन इंक्लूडेड इन द 5 years CET कोर्स। तो 5 years CET के लिए आई विल बी मेकिंग एन डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। तो विल जस्ट टॉक अबाउट द 3 years LLB CET एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनकी CET अब जबकि पास आ चुकी है विद जस्ट 55 days रिमेनिंग। So I'll prioritize that one, and once the forms are out for this CET, 5 years CET, I'll try to make the video on that one also. So ये 4 sections है जो हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर दी 3 years CET, जो कि है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद करंट अफेयर्स, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो द सिलेबस, तो ये अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन दी व्हाट इज बीन मेंशन्ड बाय दी महाराष्ट्र स्टेट सेल विच वुड बी कंडक्टिंग दिस एग्जाम। तो उन्होंने जो सिलेबस यहाँ पे डिस्क्राइब किया, बेस्ड ऑन दैट what all things and the analysis of previous years, the questions being asked from various fields, तो उस इस पे जो हमने डिसाइफर किया है, सो बेस्ड ऑन दैट द लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, द पोर्शंस दैट वुड जिस पोर्शन से आएंगे, तो दोज आर फिर द क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग सेक्शन। फिर इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंटली इंडियन पार्लियामेंट जो है, based on that the law of torts and law of contracts. Law of torts is a very important section when it gets to the law CET, तो ये favorite topic है, at least 1-2 questions you might expect. फिर legal fundamentals and terms. So unlike the law CLAT exam जहाँ पे principles applicatory based questions have been asked, यहाँ पे mainly factual and principle based होंगे in the law CET. So not you shouldn't expect in passage like questions, तो एक 1-liner 2-liners होंगे, based on that the principles of law you should be able to answer, you are expected to answer those questions. फिर important landmark judgments of Supreme Court, so these are also important ones, यहाँ पे you should go through them at least once कि कौन से landmark judgments of Supreme Court आ चुके हैं, and legal maxims. So legal maxims is a favorite topic, you might expect 2 to 3 questions from this also, or 5 questions maybe, क्योंकि legal maxims based on that एक 1-liner 2-liner में they'll be asking you what is this legal maxim, what does this legal maxim means. तो ये सारे legal aptitude and legal reasoning में you could expect these questions from. Major portion would be from Indian constitution and Indian polity, rest you could expect few questions. फिर आता है दूसरा सेक्शन, दिस विच इज़ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कंसिडरिंग वी जस्ट हैव 55 days एज ऑफ नाउ। तो अब वुड इट बी प्रूडेंट फॉर अस, लाइक कि अगर हम स्ट्रेटेजाइज करें 55 days में कंप्लीटिंग द एंटायर जनरल नॉलेज, सो हैड आई बीन ओवर देयर एट योर प्लेस एज ऑफ नाउ, तो मैं पूरा मतलब वाइजली यूज़ करने का ट्राई करता कि जनरल नॉलेज इज़ वास्ट। इफ़ यू कंसिडर ऑल्सो कि हमें साल भर का इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर 1 साल का जनरल नॉलेज टू कीप इन माइंड। सो यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो अगर करंट स्टैटिक जीके के लिए यू कुड गो थ्रू एनी बुक, लाइक आई हैड गॉन थ्रू दी while preparing, I had used the Awards's guide book that is been released by the Hindu Law publication. So it was a very good book. Those book ने मुझे help की in standardizing and upgrading my preparation strategy. तो उस book में it helped me for static GK. You could also, if not any guide book you have, तो आप online भी जा सकते हो, और you could opt for this book called as Lucent's GK. तो ये book available in market also, and you could buy it from online portal also, any website. तो यहाँ पे in static GK that's been mentioned by the CET, तो static GK ancient history, medieval history, modern history, polity, economics, geography and general science, the questions from all these territories or these all these subjects you could expect in the static GK portion.
current affairs. Now here comes the thing, current affairs, like from where and till what you should study. So I'll recommend you to focus mainly on past 6 months prior to this February. If you are opting for the exam, so till until Feb only you should go through it, and past 6 months from there. Awards, Nobel Prizes, winners, important days, key office holders. So you could expect questions. Nobel Prizes is one of the favorite ones of CET, as I had given the exam back then. Also, many questions were asked from the Nobel Prize winners, awards, important days, office holders, ministry portfolios. All these are very important. International and national happenings. You should go through the map also. तो आपको एक map, and I'll say कि word map atlas आपके साथ रखो, just to go through the get a general idea कि what all the happenings are over there. Israel के surrounding, Ukraine and everything, Russia का map, what all means, and India considering issues, international happenings, जैसे कि अभी Maldives वाला issue है, so everything. तो चाइना की इंडिया चाइना बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड एवरीथिंग. तो ये कुछ जनरल नॉलेज है, यू शुड बी अवेयर ऑफ, जो इम्पोर्टेंट है. जस्ट टू मीन्स इन केस अगर नहीं पता तो एटलीस्ट इट वुड बी हेल्पिंग यू इन एलिमिनेटिंग दी ऑप्शंस. तो ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है. फिर इंग्लिश के लिए they'll focus, means CET focuses mainly on vocabulary, unlike the reading comprehension section and long passages. Yes, weightage है reading comprehension के लिए, but not that difficult compared to the CLAT level you'll be seeing over here. So यहाँ पे vocabulary, synonyms, antonyms, parajumbles, analogies, proficiency, English usage errors, idioms, phrases, one word substitutions, all these one liners. So you could find it in any book. And if you are मतलब अगर आपका English it's not that good, या आपको लग रहा है कि you are struggling in English, so I'll say कि आप कोई basic book ले लो जहाँ से आप नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी कुछ बुक है. आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट द डेटा नेम, बट हाँ नॉर्मन लुइस की है. रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर बुक है, इट्स वेरी गुड. एंड रादर देन अगर आप है टाइम अगर, तो यू कुड गो थ्रू, मीन्स इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू इट फास्टली तो सही है. Else I'll tell you to go through daily reading of any basic newspaper, any local paper you might go through, or the Times of India, which has I'm not telling you to go through the Hindu or Indian Express editorials, but yeah, Times of India has a good English and to start with. तो if मतलब टाइम क्रंच कैसे है, इंग्लिश इज द वेरी, अब अगर प्रेफरेंस से हमें जाना है, कंसिडरिंग जो 4 सेक्शंस है हमारे पास, इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, तो कैसे जाना है. अगर हमें 120, आई विल शेयर विद यू द स्ट्रेटजी. अगर हमें पास 120 मिनट्स है, अगर हमारे पास 120 मिनट्स है एंड 150 क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो आई विल टेल यू टू स्टार्ट विद इंग्लिश. I'll tell you to start with English, cause English जो English questions you will be able, वहाँ पे हम stuck up नहीं हो सकते. Logical reasoning there's a chance, अगर कोई set आ गया and if it's not doable, puzzle आ गया and if you get caught, तो you'll be spending more time over there, और फिर बाद में वो pile up होता है tension, and at the end of the set अगर वो solve नहीं हो पाया, it would be very it would be a loss for you of time also. तो I'll tell you कि English section के साथ start कीजिए. यहाँ पे जो वन वर्ड्स वोकेबलरी बेस्ड होते हैं, ट्राई टू सॉल्व देम वेरी फास्ट. तो ये स्पीड कैसे बनाई, इट वुड, अब इंग्लिश इज नॉट दैट थिंग कि वो ओवरनाइट दिस 2 मंथ्स में होगी, बट या इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट. अगर डेली आप स्टार्ट करोगे रीडिंग पेपर और एनी एडिटोरियल्स मोर ओवर, तो ये आपको हैबिट लग जाएगी. मतलब हैबिट इन द सेंस आप बेसिक छोटे छोटे आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो या न्यूज़ क्लिपिंग्स पढ़ सकते हो. इंग्लिश एनी पेपर, एनीथिंग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो. कंसिडरिंग अगर आप जॉब कर रहे हो तो अलॉन्ग विद इट तो आप डेली कुछ हिंदी इंग्लिश पॉडकास्ट या यूट्यूब सुन सकते हो, तो आपको वर्डिंग समझ आएंगे. यहाँ पे अब एरर स्पॉट करने आपको. सो आपको अगर आप ग्रामर वगैरह ग्रामर एंड ऑल करते अभी बैठोगे, कंसिडर अब ग्रामर के जो है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच एंड ऑल, दोज आर वेरी फैक्चुअल बिट्स. अब आपको कितना कैच होगा आई डोंट नो, बट इफ़ यू गो थ्रू दी डेली आर्टिकल्स एंड ऑल, तो आपको समझ आएगा कि दिस वर्ड इज़ नॉट गोइंग विद दिस सेंटेंस एंड ऑल.
तो यहाँ पे वो बेनिफिशियल रहेगा फॉर स्पॉटिंग एरर्स एंड इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑल्सो एवरीथिंग। पैराजम्बल्स तो कैसे सेंटेंस मेकिंग होती है, इफ यू गो थ्रू दिस लास्ट remaining 50 days daily, if you go through the paper also, it would be more beneficial than rather than opting for any specific book also. तो आप एक काम कीजिएगा, इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड डेली हाफ आवर टू 1 आवर दे सकते हो फॉर जस्ट फॉर रीडिंग पेपर्स एंड ऑल। तो ये आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ाएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा में इट वोंट बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। तो आप कम टाइम में यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक होता, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो ये कब इम्प्रूव होगा, जब आपको समझेगा कि हाँ दिस सेंटेंस और दिस लाइन इज नॉट गेटिंग फिट ओवर देयर। तो यहाँ पे आपको फिर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और कैसे सेंटेंस शुरू होती है। यहाँ पे यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज़ है, आई विल ट्राई टू पुट सम वीडियोज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड ऑल्सो थ्रू द टेस्ट सीरीज ऑल्सो if anyone wants it, तो मैं वहाँ पे भी I'll try to provide you with some questions with spotting errors, spelling mistakes and grammar related। तो ये कुछ questions you could expect in the English language English portion। तो जो मैंने कहा 4 sections, तो you should start with English and try to finish it considering the amount of questions over there। तो English के हमारे पास आ रहे हैं कुछ 50 questions, so it is a very huge chunk of questions that you will be getting। तो यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज है। सो इन आने वाले कुछ दिनों में इंग्लिश को हम सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट भी करें तो इट वोंट बी अ लॉस फॉर अस, तो ये बेटर ही होगा हमारे लिए। तो 150 क्वेश्चंस है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि लेस देन हाफ आवर में हम कवर कर लेंगे, या मैक्स टू मैक्स 20-25 या 30 मिनट्स में हम कवर कर सकेंगे इंग्लिश एंड रेस्ट फॉर द अदर सेक्शंस। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन अगर वी कुड स्टार्ट विथ, तो फर्स्ट वी शुड प्रायोरिटाइज इंग्लिश, उसका वेटेज भी बहुत है। देन वी शुड गो फॉर दिस थिंग लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जहाँ पे देयर इज अ लेस चांस ऑफ गेटिंग स्टक। और यू कुड ऑल्सो स्टार्ट विथ इंग्लिश एंड देन जीके। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि just a minute. You could start with English, then you could go to the general knowledge or current affairs section, whichever, and depending on this, अगर आप comfortable हो ज़्यादा general awareness में, तो you could go for it, or legal aptitude or legal। I'm talking about legal aptitude second cause वो static portion में आएगा। So maybe if you are well prepared with it, तो आपका tension pile up नहीं होगा। देन फिर थोड़ा सा फ्री होके यू कुड गो फॉर जनरल अवेयरनेस, बिकॉज टाइम क्रंच होगा तो टेंशन पाइल अप होता है। सो कंसिडरिंग 2 घंटे में यू शुड बी वेरी एक्टिवली माइंडेड, मतलब आपका यू शुड बी एट योर माइंड शुड बी कंटिन्यूसली वर्किंग। तो आपको एकदम क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे, मे बी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे यू शुड बी गेटिंग स्टक, आप कहीं पे स्टक नहीं होने चाहिए। तो यू कुड डू दिस 2 sections, इंग्लिश ऑल्सो, लीगल एप्टीट्यूड में, और करंट जनरल नॉलेज बेस्ड अपॉन योर स्ट्रॉन्ग जोन्स। और फिर लास्ट में यू कुड डू दिस लॉजिकल एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे एक सफिशिएंट टाइम अगर आप रखते हो फॉर दिस सेक्शन, हाफ आवर और मे बी मोर देन दैट, तो आपको यू विल बी एबल टू गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चन, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड, बट आई विल टेल यू टू गो थ्रू दिस लास्टली लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल सेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इंग्लिश भी हो गया हमारा एंड लॉजिक। अब देखते हैं कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। सो दीज वुड बी रिलेटेड टू नंबर सीरीज, फिर एनालॉजीज होती है, फिर ब्लड रिलेशंस होती है, देन देयर वुड बी सीटिंग अरेंजमेंट, दिस शुड बी डन एट लास्ट कंसिडरिंग दिस MBA लॉ CET, क्योंकि यहाँ पे सब टाइम पे है, टाइम का खेल है मोस्टली। क्वेश्चंस वुड बी ईजियर एंड इट्स नॉट दैट कि पर्सनली नहीं लेना है किसी पजल को कि लाइक आई शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, आई एम नॉट एबल टू, लीव इट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, लीव इट, गो टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे स्टक होके मतलब नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर सॉल्विंग वन सेट ऑफ 5 क्वेश्चन and you are spending it 15 minutes over there, you would have solved around 15 questions of English in those 5 to 10 minutes। तो वहाँ पे यू हैव टू एनालाइज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, ROI है कि नहीं, मतलब इफ़ यू आर स्पेंडिंग इट सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस, तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।
फिर statements and assumption based questions, statement and conclusion, assertion and reasoning. Syllogism एक easy होता है जो you should be able to solve it very fast. Direction and distance coding, तो ये higher level पे नहीं होगी compared to CLAT. Those would be on a very moderate to easy level. But आपको बस ये देखना है कि you should be able to solve those in the time frame being mentioned. तो ये इस चीज़ के लिए ये बनाता है important. And this is the basic mathematics, and this is not for this 3 years but 5 years LLB के लिए. तो 5 years LLB वालों के लिए जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो आती है तो 10 मार्क्स होते हैं. बट या दोज आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग जो कट ऑफ्स हाई जाते हैं 130 140 120 बाई. तो वहाँ पे जब परसेंट मतलब कंसिडरिंग जो 5 years LLB के लिए ओनली फ्यू मतलब सीट्स आर फ्यू कंपेयर टू मीन्स 3 years LLB एंड कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई. तो वहाँ पे बेसिक मैथ्स इज ऑल्सो द पोर्शन दैट यू शुड नॉट नेग्लेक्ट. तो वहाँ पे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, वेन डायग्राम्स, अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्लॉक्स, बेसिक मेंसुरेशन, एरियाज एंड वॉल्यूम. तो ये ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो इसके ऊपर द 5 years LLB आई ट्राई डिपेंडिंग ऑन अगर मेरे को बहुत सारे रिगार्ड सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिक मैथमेटिक्स एंड 5 years LLB CET. तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस 5 years LLB CET. नाउ दी टॉकिंग अबाउट दी सोर्सेज, तो मैंने जो मेरे अटेम्प्ट में यूज़ किया था तो was दी हिंद लॉ पब्लिकेशंस अवार्ड, so award sir's guide to महाराष्ट्र CET. So it was a very good book. In depth इन्होंने सब cover किया था and all the topics related to static and all and legal reasoning which is a very completely new for us. तो यहाँ पे in this book it was very well covered. आप चाहे तो किसी और Aryans, Lucent and all those books are also over there. You could refer to any book and online materials. और अगर आपको चाहिए तो you could contact me or reach out to my cell number or email and telegram channel also of Into Law. So this is in short the strategy for 3 years LLB and in-depth strategy or day-wise timetable if you want. I could do that for you also कि कैसे आप prioritize कर सकते हो sections को. So this was a small strategy related video. In-depth अगर आपको strategy चाहिए based upon if you're working professional and all, तो I'll customize it and I'll make it for you जैसे कि preference देने चाहिए or considering this short span of time we have. So this is a very golden opportunity for you to start preparing and fill the form. At least अभी आपका target हो गया. Hopefully you should have filled the form as of now. अगर नहीं किया है तो don't wait for those last days. कर देना and start preparing for the examination. And trust me, it's very easy and doable to crack these exams with a very good percentile and getting into a good college. बस आपको एक डेडिकेटेड 2 months ऑफ स्टडी चाहिए एंड विद स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, नॉट स्मार्ट वर्किंग स्मार्टली, नॉट इंटेलिजेंटली बट स्मार्टली कि कैसे कौन से सेक्शंस प्रीफर करने हैं, प्रायोरिटाइज, नॉट जस्ट कि अब जीके पढ़ा है, करंट अफेयर्स जो हाइप चल रही कि करंट अफेयर्स करना है तो गोइंग थ्रू इट एंडलेसली कि करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली वास्ट, जीके एंड जनरल नॉलेज. सो उसको कैसे मीन्स टू द पॉइंट पढ़ना है, व्हाट ऑल सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट ऑल न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट. तो based on that you will find more related for more content related to this law CET. Please share it if you find it useful and subscribe to this channel and share with other law aspirants also who are willing for or who are preparing for their CLAT examination, law CET highlights or SLAT. And if you want me to post it a day wise with an entire weekly and monthly schedule, so I'll do that for you also. Thank you.